जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो के अंदर वी गोना टॉक अबाउट लेक्चर नंबर 10 एंड इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं टास्क नंबर 5 टू ऑनवर्ड 8, राइट। एंड कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे यार कि उन्हें जो असाइनमेंट 1 2 एंड 3 हमने की है उनके जो टास्क 1 2 टू 4 ऑनवर्ड ये उन्हें अच्छे से समझ नहीं आया। मैं उन्हें ये मशवरा दूंगा, प्लीज रिवाइज द वीडियो अगेन एंड ट्राई टू वॉच ट्वाइस। एंड अगर फिर भी समझ नहीं आती दे कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और इन अ पर्सनल ग्रुप, राइट। सो आई विल ट्राई कि मैं जो आगे आने वाली वीडियोस है उनमें मैं करा दूं इंशाल्लाह, राइट। सो अब हम चलते हैं अपने टास्क की तरफ एंड दैट्स द स्पीड यूनिवर्सिटी लाहौर फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। इसको नहीं देखना। वी गोइंग टू टॉक अबाउट लेक्चर नंबर 10 and in which we will talk about task number 5. आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो स्क्रीन पे, बट मैं दूसरी स्क्रीन में पढ़ूंगा, राइट। So task number 5 out, write a C++ program to input the year from user and check whether it's a leap year or not, right? Okay. So condition बहुत ज़्यादा सिंपल है हमारे पास। I know थोड़ी सी लेंथी कर दी है in question because of they want we use nested in, right? कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, बहुत इजी है और आई विल ट्राई कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं हर क्वेश्चन को, राइट। सो फॉर इंस्टेंस ऑफ टाइम वी जस्ट मेक अ स्ट्रक्चर एंड फॉर दैट आई एम मेकिंग अ सिंपल एप्लीकेशन। मैं इसमें VS कोड यूज कर रहा हूँ, राइट। VS कोड एक्चुअली VS स्टूडियो, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। माइक्रोसॉफ्ट VS स्टूडियो मेरा फेवरेट है ये ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस, एंड वो डेफिनेटली जिस तरह आप सेमेस्टर्स में आगे पढ़ते जाएंगे एंड यू नो अबाउट देयर आर वेरी टॉपिक्स अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ERP सिस्टम डेवलपमेंट, so you can understand why this software is very good for development, right? So first of all we just add a simple structure include and we have IOStream, right? IOStream, so आज जो टाइपिंग मेरी स्लो होगी so कंसीडर करिएगा, आप इस स्लो लिखिए, राइट। यूजिंग नेमस्पेस std नीचे जाना है, ओके std। असल में आज मैं टाइपिंग कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, सो थोड़ा सा स्लो चलेगा काम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट मेक एन int main function. You know about main function? What's the main function? The main function in which all the code will be executed. Main function, there are some other function like that. You can make your own function, and some of the developers, the father of C++ actually, they decided that कि जो main function हमारा है, जितने भी other functions है, उन सबका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा मेन फंक्शन के अंदर ही, राइट। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको हर प्रोग्राम को समझा सकूं। देखिए, some of the other functions available in the program in the all VS code maybe in the page and no matter अगर वो मेंशन किए गए हैं किसी और जगह पर in the form of biscuit खाओ, राइट, कुछ भी बना दो यार, no matter, right? Okay, that's the function, right? Another function, you just make anything else, and for example another function that is int sum, where we have two values. No, wait a second, we have two values if they have we make a two parameters, right, in which we have two parameters a and b, and then we just add on. Yeah, I know we can get int is equal to a and something else, right, but we don't consider that things, we may just focus on functions. if पता क्या ये फंक्शन मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, प्रूफ नहीं है इस वीडियो के लिहाज से, वो आगे जरूर पढ़ेंगे क्योंकि चीजें यहाँ स्टार्ट में रिवाइज हो जाएंगी तो सारा बेटर, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं और मे बी यू फॉरगेट अबाउट इट, राइट। सो वी हैव एन int sum is equal to a plus is equal to shit. Okay, so maybe if we consider that there is an is equal to and something else, I think so there is a issue with the button. Okay, I'm sorry यार, मैंने ना कीबोर्ड चेक नहीं किया था, उसमें भी कोई बटन इशू आ रहा है। So we have a sum function for example and we just add a and b
So ये जो A and B है, they will be add on the parameters in which A and B. Okay. So if we have two parameters, then we can make another question built-in functions and जो ये built-in function है या built-in function है, ये कहाँ पर execute होंगे? ये execute होंगे यहाँ पर, right? How to execute that? जो errors आ रही हैं वो ignore करो. जो मैं आपको सिर्फ concept समझाना चाह रहा हूँ, ये actual function structure नहीं है. C++ पर different होता है, ठीक है? लेकिन जो standardized function है different programming language का, वो यही होता है, right? But we ignore them, right? For example, now we just gonna solve this question. ठीक है? Question is very simple. We just copy the whole question and okay. So after that, I just comment this. Okay. So at that time we just make a body, right? We just make a body and now we just gonna solve this question. We have an int. हमने एक नंबर लेना है यूजर से in the form of year, right? So I get year, right? Now we have a cout value where we just enter the leap year. Maybe leap year नहीं, maybe not leap year. Just enter a leap year, right? So after that we just gonna add cin where we add year here, right? So यहाँ okay, I'm sorry, there's an issue. So that's it. यहाँ तक that's it. हमने क्या किया, यूजर से हमने year लिया, year को हमने स्टोर कर दिया year नाम के वेरिएबल के अंदर, right? That's it. Now we just completed this action of storing a value in a year. Now we have a condition. According to our question, we have three type of condition in FLs. Okay, wait a second, मैं पूरा question proper on कर लूँ. Okay, so we have a three condition right here. First of all, we have a condition where we just get the modulus of divisible by 4 because यहाँ पे लिखा है हमें divisible करना है हमने 4 के साथ. So यहाँ ले लेते हैं हम 4 now और उसको equal चेक करना है 0. तो कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या we check by that. I'm sorry. Okay, can we check the equality by three assignment signs, maybe 3 assignments or maybe 2, because in some other programming languages there are other meaning of 3 assignment operators, right? That means can we check by data types and the value of the standard points, so then we use 3 equality sign. But in C++ there is no any other option by using only we use only 2 assignment operators, right, for checking equality. So for that we just open it and we make a condition here if here modulus 4 which is equal to 0 or not, right? फिलहाल is equal to 0. अगर तो ऐसा होता है जो कि डेफिनेटली होगा, तो क्या करना है, एक नेस्टेड फंक्शन बना रहे हैं. अगर होगा तो नेस्टेड फंक्शन चलेगा और उसमें हमारे पास यहाँ पे है here modulus I think 10 या 100 के 100 है, राइट? और उसका चेकिंग कर लेना कि क्या वो बराबर है 0 के और नॉट, ठीक है? अगर तो ये भी 0 के बराबर है देन एक और कंडीशन बनाएंगे, वो कंडीशन नेस्टेड कंडीशन होगी. ये भी नेस्टेड इफ ही है, इसके अंदर भी एक नेस्टेड बना ली है. हाँ, मल्टीपल कंडीशन बना सकते हो नेस्टेड के अंदर भी. we don't need to use else if function, just do this, right? So now we have another condition that is if and here is here modulus there is another value 400, okay, 400 which is equal to 0. Maybe you can change this also, right, according to your question requirement, but at that time we have this requirement, so we can use by that. So we have a cout and we just open it and we say here, okay, wait a second here, and again now we have an is a leap year. अगर सब कंडीशन ट्रू होती है हमारी, now
that's it, this is the question solved by that, because we have just this condition. अगर ये condition हमारी proper solve होती है, means requirements पर पूरी उतरती है, तो that's mean this year is a leap year, right? So now अगर ऐसा नहीं होता, so क्या करना है? हाँ, simple है यार, see out and year. Now we have, that's it. This is not a leap year. It is not a leap year or no. Okay, and add some space in that because we don't want that year is combined by side. That's why we make a space. Okay, so after that we make an other else condition and उसमें भी हम ऐसा ही करते हैं यार कि if condition बना दी ना, यहाँ पे भी else बना देते हैं और उसको भी कह देते हैं कि देखो यार, मान लिया तुम्हारी नेक्स्ट स्टेप ठीक है, अगर उससे पहले ही हमारी कंडीशन ठीक हो जाए तो क्या करो? सिंपल है ब्रदर, सिंपल है, बहुत सिंपल है कि यार उसके लिए करना कि बता देना इसको कि अगर ये कंडीशन ठीक ना हो तो हम फॉर्मल क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, तो हम क्या देंगे यार, हाँ ठीक है, इज अ लीप ईयर, तो हम ये भी कह देते हैं कि भाई तुम सही हो भाई, तो ये भी एक लीप ईयर, राइट? स्पेस इज ए लीप ईयर. ओके, दैट्स इट. सो ठीक है, तो भैया जो हमने स्टार्ट में इफेक्ट कंडीशन बनाई है उसका क्या करना है? तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगर सिर्फ ईयर मॉडुलस 4 विच इज इक्वल टू 0 होता है और अगर नहीं होता है, जाहिर सी बात है भैया, जाहिर सी बात है, तो उस केस में हम कह देंगे इसको सी आउट ईयर, ठीक है, एंड वी जस्ट से is not a leap year. Okay, that's it. So question वाला solve है, return 0 करने की जरूरत नहीं है, we just make a question. Now we just run this question. I hope this question is very very helpful for you, और मैंने आपको अच्छे से explain किया है and I hope कि आपको समझ आ गई होगी. We just run this question. So अगर मैं देता हूँ इसको 2024, so that's 2024 is a leap year. Now I enter again. I just open this and I just entered 2021. So this is not a leap year, right? So this question is run accurately, but there is a note or maybe information. अगर आप assignments कर रहे हो उसको देखकर, तो please don't copy this code, change this code by using comments and variable names, right? ताकि बस ठीक है, समझ गए होगे आप यार. शो को प्लीज इग्नोर करना. क्वेश्चन यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है. अब मैं इसे रिमूव कर दूँ, अब होगा प्रोवाइड नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी. सो इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ. चलिए जी यार, बॉडी में दोबारा नहीं लिखूंगा, बॉडी हमारी वही रहेगी. जस्ट मेक अनदर क्वेश्चन एंड दैट्स क्वेश्चन नंबर 6. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. This question is very interesting and maybe it takes some time. अगर टाइम ज़्यादा लेती है तो उस केस के अंदर we solve the question number 7 and 8 in another video, right? So yes, 7 and 8 in another video, right? So इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं, और maybe it's a last question. वीडियो होगी हमारी 30 मिनट्स की. अगर it will exceed it at 22 minutes, so definitely हम इसको नेक्स्ट टास्क में हम इन्वॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में. So क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भैया ऐसा है, मैं कॉपी कर लेता हूँ एक सेकंड. We have question number 6. हाँ ना, बिल्कुल असाइनमेंट नहीं कॉपी करनी. हाँ, वो असाइनमेंट आपके सामने आ गई है, मैंने उसे कट नहीं करना यार, मैं दिल नहीं कर रहा था वीडियो एडिटिंग करने को बिल्कुल भी. सो प्लीज कॉपी, उसको बिल्कुल कॉपी नहीं करना. चलो, सो क्वेश्चन में ये कहा गया है, you just do reading by this screen. Create a C++ program that allows user to either sign up for a new account or log into an existing account. Where we have an condition sign up. Okay, when a user choose to sign up. Okay, ठीक है, sign up login, and we have another that is checking into credentials much once stored during the sign up process. Okay, and maximum of 3 attempts to enter the correct username and password. ठीक है. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स, राइट? और उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे इंटरनेट फंक्शन के अंदर,
वी जस्ट एंटर, हम स्ट्रिंग्स ही लेते हैं यहाँ पे, राइट, कॉमन स्ट्रिंग लेते हैं और प्लीज इसको बहुत ही कोर्स समझना, रीजन ऑफ दैट आगे जाके जितनी भी एप्लीकेशन बनाओगे तो उसमें ये यूज करोगे। और एक बात पता क्या है, ईआरपी सिस्टम्स या इंटरप्राइज सिस्टम जैसे आप कहते हैं, जब आप वो बनाएंगे तो उस केस के अंदर जब अगर आप C++ को यूज कर रहे हैं या बेबी C# को यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट चीजें सेम होती है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कंसेप्ट, लॉजिकल बिल्डिंग ऑलमोस्ट सेम है, स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट। तो क्या हो गया यार, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, यू कैन अंडरस्टैंड बाय दैट, बट अगर आपको एक C++ लैंग्वेज के ऊपर अच्छे से आपको गुड हासिल हो जाता है, देन यू कैन इजीली स्विच टू अनदर लैंग्वेज, राइट। सो चलते हैं स्ट्रिंग की तरफ, and we make an username. Now we have a password. Now we have another string that is can get input username, right. Now we have an input password, right. So that's it, but please copy मत करना यार, ये मेरा खुद का कोड है, so please right. So now we have an int और हम यहाँ लेते हैं attempts और बता देते हैं भाई attempts हमारे पास टोटल 3 है। यहाँ तक हमने अपनी पहली लाइन और लास्ट लाइन मुकम्मल कर। नाउ चलते हैं अब दरमियान वाले हिस्से की तरफ और उसको जाके कहते हैं भैया कि सी आउट वी हैव साइन अप ओके, और इसे बैकस्लैश एन देते हैं, बैकस्लैश एन ओके। नाउ वी हैव सी आउट that question is very interesting by that, but please focus on that point भैया भाई okay। So we just focus on that point, we have an enter the username, right, username okay। now we have मैं यहाँ पे handle definition दे देता हूँ, handle, so we just make an handle okay। So after that we get cin and now we just getting a username from user, right. So we getting username by that. Now we have another cout, now in which we getting entered a password, right, entered a password, right, here that. Now we can just cin and now I'm getting a password from the user, password by the user। So now here is it, हमने यहाँ पर डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन कर ली। चलते हैं आगे, अब चलते हैं कंडीशंस की तरफ। अच्छा, some of the audience says भाई while लूप नहीं पढ़ा, कोई मसला नहीं, पढ़ लेते हैं अभी। So while loop is very easy यार, we just make a condition, if it is true or not then the body runs, and after that the body have another all the condition by that। in for loop we make all the condition in one line, but in while loop we don't, right। So समझते हैं, don't worry about that, we just have while स्ट्रक्चर समझते हैं पहले। while अगर while true होगा तभी रन करेगा ना, तो while true कर देते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर चलेगा, राइट। अब जाके कहते हैं आप सिंपल, मैं आपको ऐसा करवा देता हूँ उससे कि if I getting an option that you want to log in, exit or choose an option, so okay, so ऐसा करते हैं, we make an end option and after that we make if हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे सी आउट दे देता हूँ और इसे मैं कह देता हूँ कि ऐसा करो यहाँ पर कि हमें यहाँ पे 3 मिनट लगा ऑलमोस्ट, राइट, और उसमें हम दे देंगे कंडीशंस कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। सो वी मेक 1 एंड स्पेशल ब्रैकेट एंड दे देंगे हम, ठीक है, ओके। नाउ वी जस्ट ऐड अ लॉगिन, ऑलराइट। So after that we make an other condition maybe right now, so that is 2 point which is a sign up दे देते हैं यहाँ पे, या साइन अप तो हम ऑलरेडी साइन इन कर रहे होंगे ऑलरेडी, सो लॉग इन एग्जिट एंड लास्ट दे देते हैं हम यहाँ पर चूज एन ऑप्शन, सो ठीक है, हम दे देते हैं यहाँ पे चूज एन ऑप्शन, सो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, हम यूजर से इनपुट ले लेंगे
सी इनपुट में हमें क्या दे, सो इनपुट ले लेते हैं ऑप्शन। ओके, यहाँ तक ठीक है, आगे चलते हैं और अब क्या करते हैं, वी मेक अ कंडीशन, वी मेक अ इफ एल्स कंडीशन। सो if ऑप्शन इज इक्वल टू 2, अगर तो ऑप्शन जो है वो 2 के बराबर होती है, इन दैट केस ऑफ वी मेक अ सी आउट दैट एग्जिटिंग प्रोग्राम, ऐसा कर देते हैं, या हम एग्जिट प्रोग्राम ले सकते हैं, एग्जिट प्रोग्राम। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें तो हम यहाँ पे कर देते हैं एग्जिटिंग कर देते हैं, चलो ठीक है प्रोग्राम, ठीक है, और ये प्लीज कॉपी मत करना, राइट। आई थिंक यहाँ तक ठीक है। आफ्टर दैट हम ऐसा करते हैं, उसको ब्रेक भी कर देते, सॉरी ब्रेक भी कर देते ताकि यहाँ से बाहर आ जाए बॉडी सारा, ठीक है। आगे रन ना करो ना, फिर अगर आगे भी रन होगा तो जो हमने आगे कोड लिखा है वो भी डेफिनेटली उसमें आएगा, राइट। सो ब्रेक कर देते हैं। आफ्टर दैट वी मेक एन अदर क्वेरी लाइक दैट in which according to question we make a simple प्लीज यार अभी जरा थोड़ा वेट करो क्योंकि यार चीजें डेफिनेटली समझने में टाइम लगता है, तो क्योंकि क्वेश्चन जब ड्राई रन करेंगे तो ये चीजें तो फिर हमें हैंडल करनी पड़ेगी, राइट। सो यू विल ट्राई आल्सो बाय डूइंग लाइक दैट। सो if this occurs, option is true, then exiting program, and else if this option is 1. So now we make an else if. Now we here we use option which is equal to 0.1. Now I make another query in which I'm using for loop, ठीक है। So I बराबर है 0 कर देते हैं, ठीक है, 1 भी कर सकते हैं, बट बिकॉज हमारी कंडीशन तो दूसरी तो हम I करेंगे यहाँ पे 1, और आफ्टर दैट वी मेक एंड, अगर मेरा I जो है यहाँ पे क्वेश्चन का I लेस देन ऑप्शन के, ठीक है। Oh, I'm sorry. Wait a second. We make an terminating statement, not okay. So we have an I right there. Now we just add statement terminator, and we make an I plus plus. We just open this. Okay. So यहाँ तक हमने क्या किया, अभी तक यूजर से इनपुट किया, ऑप्शन को सिलेक्ट करवाया, अगर यूजर ऑप्शन 2 सिलेक्ट करता है तो एग्जिटिंग प्रोग्राम, अगर यूजर ऑप्शन 1 सिलेक्ट करता है, सो अब आगे कंडीशन बना देते हैं यहाँ पे कि उसमें हम ऐसा करते हैं यार अगर ऐसा करें, बिकॉज हमने यहाँ पे अटेम्प्ट्स दे दिए तो हम यहाँ पर अटेम्प्ट्स को दे देते हैं, क्या ख्याल बताओ अपना मुझे कमेंट सेक्शन में, ये वाले नहीं यार, यूट्यूब पे ना बताओ, ग्रुप में बता दो ताकि क्वेश्चन को इम्प्रूव किया जा सके, राइट। So we have account and we have enter a password, sorry enter username है, password की बात है, username, right, right there, and now we have a CIN, and in CIN we make and we know we're getting another variable, right, that is input username. इनपुट यूजरनेम, थोड़ा हौसला किया करें, ठीक है, वीडियोस आती रहेंगी यार, थोड़ा हौसला किया करें, अभी ये मैसेज आया इसी के लिए है, मेरे को पता है, ठीक है। सो नाउ वी हैव एन इंटर पासवर्ड here, now we have a CIN, right, and we just enter input password, okay. सो यहाँ तो हमने ले ली यहाँ चीजें, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे कंडीशन हमारी बहुत सिंपल है कि मैं कहता हूँ अगर मेरा यूजर नेम ठीक है बराबर है, पहले इनपुट ले लेते हैं क्योंकि वो स्कोप के अंदर है, इनपुट यूजर नेम अगर वो बराबर है यूजर नेम, ठीक है। कुछ लोग होंगे यहाँ पे और लगा देंगे
नहीं लगाना, एंड लगाना है। क्यों? अगर और लगाओगे तो अगर दोनों में से एक ही चीज करेक्ट होगी तो लॉग इन कर देगा यूजर, ऐसा नहीं चाहते ना, दोनों चीजें करेक्ट होनी चाहिए। सो वी जस्ट मेक एन एड ऑपरेटर। नाउ वी हैव एन इनपुट पासवर्ड which is equal to a password which is equal to, ऐसा करते हैं which is equal to password, where is password, हमने पासवर्ड लेट किया हुआ है ना, हाँ डेफिनेटली किया हुआ है, और यूजर पासवर्ड लिया भी हुआ है, बिल्कुल लिया हुआ है। चले सो यहाँ तक तो हमारा काम इतना क्लियर है, ठीक है। अब मैं अंदर गया हूँ बॉडी के, एंड हियर इज इट, आई जस्ट ऐड सी आउट लेस देन, डोंट वरी, वी नॉट लॉग इन अ फॉर्म, वी जस्ट टेक एन लॉजिकल function to enter to make a message of successful, right? To enter successfully, right? So we make a login, spelling successful, right? So that's it. Now we make another function, break. Break function here, which is a keyword to say get out, right? So ये कहता है function से get out, निकल जाओ यहाँ से, चलो निकल जाते हैं, और ये निकलना अच्छा है, ठीक है। सो एल्स लेते हैं यहाँ पे, एंड जस्ट मेक अनदर एल्स, एंड आई जस्ट से सी आउट एंड एंटर दैट इनकरेक्ट पासवर्ड और यूजर नेम, राइट। सो आई थिंक सो इतना ठीक है, और हम कह देते हैं भाई attempts left which is equal to, और इसे कर देते हैं attempts, right there, I think so, ठीक है। ओके, बट ना यहाँ पे काम करते हैं, बिकॉज यहाँ पे attempt देगा हमें 3, क्योंकि attempts हमने स्टोर क्या किया है, 3 स्टोर किया, तो उस केस के अंदर we just add a simple condition, right? So that is minus I, बिकॉज जो I है वो कम होता जाएगा ना, हर बार आंसर बढ़ता जाएगा, जितना I बढ़ेगा उतना attempt से माइनस होता जाएगा, ठीक है। तो I की जो लिमिट है डेफिनेटली वो 3 तक ही है, तो 3 तक ही जाएगा, और which is I minus 1 कर देते हैं, बिकॉज हर I की दफा 1 से माइनस हो, ठीक है। एंड सो that's it, this is a condition right now, and we just make an end there, पीछे आया फिर सर मैंने आगे माउस मोबाइल रखा हुआ है, तो मुझे वहां से इतना पार्ट नजर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। सो क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट क्लियर, राइट? सो देयर इज अ लास्ट कंडीशन देयर, एंड टू जस्ट ऐड ऑन, so if I add this condition right there, we make an other if condition, right? And we make just, because according to this question we shows that if all the attempts are cleared or they fulfill, so what this program can do, right? So we just make an attempts, right? Okay, so we just say if I is equal to attempts, मतलब I भी 3 हो जाता है और attempts ही वहाँ पर 3 हो जाता है, ठीक है। तो उस केस के अंदर ऑलरेडी यहाँ -1 आएगा, ठीक है, बिकॉज हर दफा -1 होगा तो वो 3 के बराबर आएगा, राइट। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में कर देना है सी आउट एंड सेज लाइक असेस डिनाय, राइट। ओके, सो और से क्या देते हैं, प्लीज वेट 100 मिनट्स, प्लीज वेट 2 मिनट्स। 100 मिनट्स क्यों कहेंगे यार, आई नो दिस इज अ मशीन, बट इतना जुल्म नहीं करना हमें, ऐसा आता है। और ऐसे में कह देंगे सी आउट और वेट जस्ट आई से इनवैलिड ऑप्शन, राइट। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, एंड वी जस्ट make the structure fulfill, I think so, okay, it's clear, right? So मुझे ना यहाँ पे एक इशू अभी भी देखने को मिल रहा है, बट रन करते हैं, and I hope it's done correctly, I hope, okay। मैंने यूजर नेम यहाँ पे ऐड कर दिया अली, और पासवर्ड ले दिया मैंने यहाँ पे इसको 1 2 3, okay। So ये हमें सेट कर रहा है ऑप्शन, I just add 1 enter यूजर नेम अली and password 1 2 3, so it says login to site, that's it. So question is proper accurately working, right? So मजा क्वेश्चन था, मुझे को करने में बड़ा अच्छा लगा,
एंड जो बाकी हमारे अब टास्क है, बिकॉज वीडियो ओके इट्स ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की वीडियो होगी है, सो नेक्स्ट हमारे अब 7 और 8 नंबर टास्क है, इंशाल्लाह इसे हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड मैं ट्राई मैं आपको कल लास्ट में प्रोवाइड कर दूँ इंशाल्लाह। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।